Hello, friends. Today we are meeting again on this exclusive exclusive platform of collegedeco.com and myself Deepak Gupta signing in again. And today we will be discussing about various amendments that have been made in the Income Tax Act and the other direct taxes, which have, I believe, done so much or have affected the lives of common men and the whole economy, and that has helped too much. मतलब सिंपल भाषा में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जिन्होंने गवर्नमेंट की कलेक्शन के ऊपर डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन के ऊपर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाला और लॉन्ग रन में उसको बढ़ाया है और उससे आपकी और मेरे जो कॉमन जो लोग हैं उनकी लाइफ बहुत सिंसियर और बहुत सिंपल हो गई, बहुत बेनिफिशियल हो गई और नॉट जस्ट आवर लाइव्स ऑफ द मिडिल मैन कॉमन मैन बट the whole economy, various sectors of the economy have been benefited to a very large extent. So before we move into that, we have to understand that in India, the primary direct tax is tax on the income, which we use the word income tax, and it is governed by the Income Tax Act 1961. So there are two things. It's a direct tax. It implies that the person on which the tax is levied has to pay to the government on his own. तो अनलाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस जहां कंज्यूमर से टैक्स डीलर या ट्रेडर ले रहा था और ट्रेडर गवर्नमेंट के पास जमा करा रहा था, यहाँ पर अगर आपके और मेरे ऊपर टैक्स लेवी होगा तो अगर ये टैक्स इनकम के ऊपर लेवी है तो जितनी हमारी इनकम है उसके प्रोपोर्शनेट या उसका कुछ परसेंटेज हमें खुद जाके गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कराना पड़ेगा. तो बर्डन ऑफ द टैक्स इज डायरेक्ट, दैट इज द पर्सन ऑन विच द टैक्स इज लेविड and the person who makes the payment of the tax. They both are same. So levy and the payment falls on the same person. And secondly, unlike indirect taxes, which was primarily the sales tax, that is the VAT or the excise, which were more of state taxes. So each state could have been levying taxes differently. That is why we studied in the last session about the GST and the importance of GST. Here, it is a central act. So it is basically a revenue of the central government. So it is uniform for the whole of the country. So there is no difference in the laws in a different states. It is uniform in all the cases. Now, secondly, we in addition to Income Tax Act 1961, we also had gift tax and we also had the wealth tax. These were the primary. This was governed by the Wealth Tax Act 1957, and here I don't want to mention because it has been long written off. But these were the primarily direct taxes which the Indian public was paying to the government, and because they all of three were the central taxes, the payment was collected by the central government. Now, what happened, or the basic thing is that out of the three, the basic, the most important, and the most amountable tax was the income tax. So, income tax is a progressive tax. It denotes the richer you are, the more you pay. So, as your income increases, your liability towards tax also increases. And this word income has to be taken from a threshold point of view. So, we use this word maximum exemption limit. So this maximum exemption limit is the minimum income which we presume that if a person is earning this much income in a particular year, then he is not in a position or he should not be burdened with taxation. So normally when your income exceeds this maximum exemption limit, then extra income multiplied by the applicable tax rate was the tax payable. So what I am trying to convey that as the tax was initiated in 1961 and before that it was also another act which was made by the British. So if somehow a person is having an income in 1965, तो इन 1965 अगर किसी बंदे की पूरे साल की इनकम 1 लाख रुपए भी है
that it is a huge amount and he should be liable to pay tax. And now, when we are in the 21st century and say 2020, so in this scenario, this 1 lakh income per annum is nothing. It's like peanuts. You just can't even get your breads out of this annual income. So there has to be a progression in the tax laws so that this maximum exemption limit is revised and your tax is payable only by those who can afford. That is why the original act of 1961 is amended. मतलब उसे रिवोक नहीं कर रहे हैं, उस एक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं, एंड दीज अमेंडमेंट्स आर डन ईयरली थ्रू बजट. When the budget is placed before parliament, we use the word finance bill, and once that bill is passed, it becomes a finance act. So normally the budget comes in the February of each year. So latest, if it is 21, so in February 21 we had the budget. So we use the word Finance Act 2021. So what is actually happening? The original Income Tax Act, as amended by the Finance Act 2021, becomes the applicable tax law. That is how the tax is levied. So normally we have amendments each year through the budget. So normally how the income tax is working? That in February, for example, in this case, in February 2021, you get the Finance Act, which we use the word 2021, which will be applicable for a period of 12 years. And in India, that period always starts from 1st April and ends on 31st March. So here the period is April 21 to 31st March 22. We normally write as 21-22. And whatever you earn in this 12 months will be taxed in the corresponding year. And we write it 22 and 23. So what is happening? That is a period for which the income is taxed. We use the word of previous year, and the year consecutive to the previous year in which the tax is levied, we use the word assessment year. So here, Finance Act 2021 became applicable for previous year 21-22 and assessment year 22-23. Similarly, if next year Finance Act 2022 will come, so it will be applicable for the period of previous year 22-23 and the assessment year 23-24, and that is the way it has been going on for past 50-60 years since 1961. So what I'm trying to imply here that you have to understand and note कि अमेंडमेंट तो हर साल हो रहे हैं. हम उन ईयरली अमेंडमेंट्स के ऊपर लाइट थ्रो नहीं करना चाह रहे बिकॉज दैट इज नन ऑफ आर एंड योर बिजनेस बिकॉज वेन एवर यू हैव टू appear for any exam or whenever you have to file the income tax return, then the concern has to be with respect to a particular assessment year. For example, those people who are filing their returns now, they are filing their returns for the assessment year 21-22. That is the previous year 2021, which was governed by the Finance Act 2020. So it is always for a particular year. So there is no such need to go for the history because you are concerned with the current year. What I am trying to focus that there has been some amendments which have been made either through the budget. Mostly they are made through the budget, and sometimes they are made in between through notifications and then incorporated in the next year's Finance Act and hence in the Income Tax Act applicable for the whole country. So there have been many such amendments, but there are I just want to highlight a few so that you understand the importance and the interesting character of this subject income tax. For example, we have this section 24B. Now, this is, I believe, is one of the landmark amendments of the section 24B, which has not just made it so much simple for people like you and me to purchase houses, but also it has helped in the development of real estate sector, finance sector, loan sector, and all those real estate ancillaries because it has
caused tremendous rise in demand for real estate properties. What I'm trying to say, that normally if a person has a house, then we can have three kind of uses. We can use it for our self residence, खुद के रहने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग भी, मकान लोगे खुद रहोगे ना, या मकान को किराए पे दे दोगे तो वी कैन लेट आउट, या फिर हम मकान अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये इस बात को अंडरलाइन करता है कि हाउस का मतलब रेजिडेंशियल नहीं है। हाउस रेजिडेंशियल भी हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। तो टैक्स की भाषा में मकान है तब भी उसे हाउस कहते हैं, दुकान है तब भी उसको हाउस कहते हैं। वैकेंट प्लॉट्स यहाँ काउंट नहीं होते, तो नो वैकेंट प्लॉट्स। तो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, that if you use the house for your self residence, you have no rental income। ऑब्वियस ही बात है, खुद रह रहे हो तो कमाई कैसे होगी। When you let the house and allow someone else to stay, then you get rent, and that is your income. And if you use it for your own business, then there is no rent. Actually, it saves your rent. So no rent received, I should say. बट आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका रेंट बच गया, क्योंकि अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी ना होती तो आप किसी और की जगह किराए पे लेते और उसे रेंट देते। तो इन अ वे इट इज इनडायरेक्टली अ काइंड ऑफ बिजनेस इनकम, बिकॉज आपके बिजनेस के खर्चे कम हो गए और आपकी इनकम बढ़ गई। तो व्हेन वी टॉक ऑफ दिस सेल्फ रेजिडेंस एंड लेट आउट प्रॉपर्टी, तो in income tax act we has different kind of heads to calculate the income, and the here the applicable head is income from house property. So what is happening here, that if a property is let out, then you calculate its GAV. And if the property is self-occupied, that is self-residence, then we believe that GAV is taken as nil, and hence you don't have to pay tax. So what is important, why I'm discussing this now, that if I, Deepak Gupta, owns a self-occupied property, it means I have a property and I am using it for my own residence. So as such, I don't have to pay any income tax because my GAV is nil. But what the important thing is, तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, ये मैंने अपने पैसों से खरीदी, यानी कि सेल्फ फंडेड है, या मैंने इसको लोन लिया, तो ये लोन फंडेड है। नाउ दोज हु आर रिच, दे कैन सेल्फ फंड एंड एक्वायर द हाउस, but the middle class, the lower middle class, the upper middle class, who were either not having any houses or they were looking for a bigger house, they had to take loan on which they were paying interest. So interest on housing loan. Now what was happening, that if you are taking the loan and paying interest for a self-occupied property, then that interest was being deducted from the GAV. And if this is the case, then we had a loss. Now, normally you pay tax on the income, but if you have a loss, then obviously you don't have to pay tax. But what is crucial, that this loss can be adjusted against other incomes. तो प्राइमरीली इंडिया में लोगों के प्रोफेशन क्या है, या तो जॉब या बिजनेस, और की बाकी तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है या तो वो जॉब है या वो बिजनेस है। तो जो आपकी अदर इनकम्स हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हो तो सैलरी, और चाहे बिजनेस प्रोफेशन से इनकम जनरेट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो आप, तो आप अपनी बिजनेस की इनकम पर और सैलरी इनकम पर टैक्स देते थे। लेकिन ये वाला लॉज यहाँ माइनस करने से इस एडजस्टमेंट को नाम दिया गया सेट ऑफ। तो सेट ऑफ माइनस करने से, सेट ऑफ अलाउड करने से, अगर मैं सैलरी पेशा का एग्जांपल लेकर चलूं, तो अगर किसी
की सैलरी इनकम 5 लाख रुपए थी, तो उसको 5 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ रहा है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इफ आई से 10% टैक्स था, तो ही वॉज लाइबल टू पे 10% ऑफ 5 लाख, दैट इज से 50,000. But if there is a loss of say 20,000 here, and we can allow this 20,000 from here, so now he will be liable to pay tax only on 480. So basically, if a person takes a loan for a self-occupied property, then I'm not worried about the principal. I'm not worried about the principal at the moment. But normally, when he repays, so his EMI has some proportion of principal and some proportion of interest. तो बेसिकली सैलरी पेशा आदमी के लिए ये जो ईएमआई है, ये खर्चा है, क्योंकि वो बेचारे को अपनी सैलरी में से हर बार पे करना पड़ रहा है। और अगर बिजनेसमैन है तो भी उसको ईएमआई पे करनी पड़ रही है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज आर लैंडमार्क जजमेंट्स, दैट वी हैव दिस सेक्शन 80C and we have this section 24B. So one way or the other, the Income Tax Act was first amended to incorporate that whatever is the principal which has been repaid through a EMI. So whatever was the principal of housing loan that was repaid during a particular previous year, the whole of that principal was eligible for deduction under section 80C, and it basically saved tax. बिकॉज जो 80C की डिडक्शन है उसका नेट इफेक्ट यही है कि यहाँ आप इनकम निकालने के बाद इसे बोलते हैं ग्रॉस इनकम, और यहाँ से 80C की अमाउंट माइनस करने से जो बचा हुआ वो आएगा टैक्सेबल इनकम। एंड द 24B, तो जो इस ईएमआई का इंटरेस्ट था, जो इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन था, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, that was also allowed as a deduction, and it also saved tax. तो बेसिकली एक सैलरी पेशर ने, एक बिजनेसमैन ने जितनी ईएमआई पे करी, मान लो ईएमआई 10,000 रुपए महीने की है, साल में 1,20,000 रुपए हो गए, तो पूरे के पूरे 1,20,000 रुपए इफेक्टिवली अपनी टैक्सेबल इनकम में से कम कर लेता था। जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो सेक्शन 24B से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्रिएट करता था, और वो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आपकी सैलरी से सेट ऑफ होकर आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर देता था। और जितना आपने एक साल में प्रिंसिपल रिपे किया वो फिर दोबारा से यहाँ से माइनस हो जाता था। तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी ईएमआई की अमाउंट माइनस हो गई, बट एक सेक्शन 24B में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया, तो अगर मैं एक सिंपल क्रिएट करूं तो सैलरी की इनकम में से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो गया, ये माइनस करने के बाद मेरी टोटल इनकम आई। तो ये तो सेक्शन 24B का इंटरेस्ट था। और जो टोटल इनकम में से जो प्रिंसिपल रिपे किया हाउस प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल, वो यहाँ माइनस हो गया, ये सेक्शन 80C हो गया, फिर मेरी टैक्सेबल इनकम निकली। तो पूरी की पूरी ईएमआई माइनस हो गई, और इस पूरी की पूरी जो ईएमआई ने से ये पूरी की पूरी जो ईएमआई थी, ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर था, बट वो रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर हो गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, बिकॉज इससे मेरे को क्या होनी शुरू हुई, टैक्स सेविंग। तो आई शुड से दैट वन ऑफ द क्रूशियल अमेंडमेंट्स which is just changing the scenario or tax saving for the common man, is the inclusion of the principle of housing loan under section 80C. And secondly, the amount of interest which was applicable for a particular year. So when you had this self occupied, I said your GAV was to be taken as nil, और उस
जीएवी में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन माइनस कर रहे थे, और वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का सेक्शन 24B था। तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट अगर माइनस करते तो ये लॉस बहुत ज्यादा हो जाता। तो इस इंटरेस्ट के ऊपर लिमिट थी 30,000। इससे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर जो मैक्सिमम लॉस था वो सिर्फ 30,000 रुपये आ रहा था। सो द सेकंड बिगेस्ट अमेंडमेंट which just induce the demand for realty, हाउसिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, पूरा रियल एस्टेट का एसेसरी सेक्टर ग्रो करा, क्योंकि इस अमेंडमेंट से पूरे हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो क्या था कि इस लिमिट को पहले गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 1,50,000 किया, और उसके बाद अभी लेटेस्ट सिनेरियो में मोदी राह में इस फिगर को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। तो आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल, but this amount of 30,000 was increased to 150 by under Vajpayee government in 1999, and it was increased to 2 lakhs under Modi government around 2000 after 2014. तो बेसिकली ये जो लॉस था ये 30,000 की जगह मैक्सिमम आज की डेट में 2 लाख हो गया। और अगर किसी के पास 30% टैक्स स्लैब है, तो अगर मैं 30% टैक्स रेट लेके चलूं तो बेसिकली 60,000 रुपए का टैक्स सेव हो सकता है मैक्सिमम। और जो 80C थी, 80C को की लिमिट को भी इंक्रीज करके मैक्सिमम 150 कर दिया गया। तो अर्लियर यहाँ पर लोग टैक्स की सेविंग करने के लिए इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट थे, बट अब वो प्रिंसिपल आ गया। तो बेसिकली अगर मैं प्रज्यूम करूं कि एक आदमी 80C में सिर्फ हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल यूज कर रहा है और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, तो कुल मिलाकर 80C के 150 और 24B के 2 लाख, ये मिलाकर 3.5 लाख रुपए अगर एक आदमी अपनी ईएमआई पे कर रहा है, यानी कि पूरे साल में जिन लोगों की ईएमआई 3.5 लाख से नीचे है, वो उस पूरी की पूरी ईएमआई अमाउंट को इफेक्टिवली अपनी टैक्सेबल इनकम से कम करके टैक्स बचा लेते हैं। और जिन लोगों की ईएमआई 350 से ज्यादा है, तो वो 350 का बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं पूरे को लेके चलूँ 30% स्लैब रेट से, तो एक तरीके से मैक्सिमम 1,05,000 रुपए की टैक्स की सेविंग आपके पास अवेलेबल है, जो आप यूज कर सकते हो। नाउ बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमंगस टैक्स सेविंग्स, so many people were interested in purchasing the house। तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर, तो जो आज पूरे कंट्री में रियल एस्टेट का बूम है, इतने सारे प्राइवेट बिल्डर्स काम करते हैं, ये इस अमेंडमेंट के बाद ही आने शुरू हुए, जब पहली बार वाजपेयी ने इस लिमिट को 150 किया था। इसके कारण बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुआ। तो बेसिकली एचडीएफसी, India Bull Housing Finance, GIC, and there are at the moment tens of housing finance companies, because whosoever is going to buy a house, in spite of having his own money, he opts for loan funds because this saves the tax. And in addition to that, the banking housing loan rate interest, हाउसिंग लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट के रेट्स थे वो भी आरबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गाइडेंस में बहुत कम कर दिए। तो हाउसिंग लोन लेना इंटरेस्ट के पर्पज से बेनिफिशियल हो गया, और टैक्स के पर्पज से बेनिफिशियल था ही था। तो पूरा सेक्टर रियल एस्टेट बूम हुआ, एंड बैंकिंग सेक्टर में बूम हुआ, असेसरी सेक्टर में बूम हुआ। असेसरी मतलब जो मान लो आपके पाइप सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे, सैनिटरी सेक्टर है, टाइल सेक्टर है, इंटर डिजाइनिंग्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। तो इन सब में ग्रोथ आने से, और रियल एस्टेट वर्कर्स, तो देयर वर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जॉब्स व्हिच वर क्रिएटेड। तो इट जस्ट गिव्स सो मच इम्पिटस, थ्रस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, और इससे हमारी जीडीपी में मल्टीफोल्ड्स ग्रोथ हुए। हमारी हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बहुत बढ़ गई, जिससे हाउसिंग की प्रॉब्लम पब्लिक की कवर होनी शुरू हुई। ठीक है, बैंक्स के पास काम बढ़ गया, लोगों के पास घर अपने आने शुरू हो गए। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट से मल्टी फोल्ड ग्रोथ हुई।
So I personally believe, and the different people can have different views about the same, but I personally believe that expansion of Section 24B limit from 30,000 to the present level of 2 lakhs is a basic reason which has caused this huge growth on these major Indian economy sectors, and also the inclusion of principal under Section 80C has supported this cause of government, that is the housing for all. This is one of the major, I should say, one of the most important landmark amendment which has changed the phase of, which has changed the way of Indian economy as a whole. There are so many amendments which have huge impact and that can be discussed. But today, if I get into that amendment, then it will change the focus. And as a tribute from my side to this huge, crucial landmark amendment in Section 24B to increase the allowability of interest from 30,000 to first 1 lakh 50 and then 2 lakh should be rewarded, should be properly complemented. That is why I will finish the session at this point, and we will hope, I hope so that we will meet again and have this discussion again and again in future also. Thank you very much. This is Deepak Gupta signing off on the platform of